Question number 1 reads, the advent of the Mauryan dynasty marks the passage from darkness to the light for historians. Comment. What is the demand of this question? जो डार्कनेस टू लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन है, we need to establish its वैलिडिटी कि भाई इसको एक्चुअली इस तरह से देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए. ठीक है. Now, this statement itself was made by Vincent Smith at the beginning of the Mauryan age, marked the period of the passage of Indian history from darkness to light for historians. किस बेसिस पे इसने बोला? What was the basis of this analysis? Twofold. First of all, he was talking about the sources that became available to study history from the Mauryan age onwards. A lot of literature, inscriptions, archaeological remains, etc. they became available, जो कि पहले कम थे. And the other thing that he was talking about is that it was at this stage that India's national life truly began. And he attributed this to developments such as political integration, centralized rule, religious developments, socio-economic growth, right? For example, डीप साउथ में पहली बार इंडियंस हिस्टोरिकल एज में आ रहे थे, स्टेट फॉर्मेशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई. The Mauryan rule prepared the various regions for establishing independent polities, etc. Right? So, in the true sense, India's national life started with the establishment of Mauryan rule, or during the Mauryan rule. India received many of the characteristics of what we today recognize as being Indian. तो अगर इंडिया का आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, particular type of value system, particular type of culture, particular you can say attitude towards others around you, towards environment, तो ये सब Mauryan period में shape होना शुरू होता है. This is what Vincent Smith has argued, right? Now, इंट्रोडक्शन में क्या करना चाहिए हमें? हाँ, कि भाई विंसेंट स्मिथ ने ये स्टेटमेंट दिया है. अगर आइडिया है आपको तो बताइए, नहीं आइडिया है तो भी आप ये नोशन तो पता है ना कि किस बेसिस पे क्लेम किया गया है, एटलीस्ट इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर दीजिए. सो
इंट्रोडक्शन, आवर जॉब इज टू कंटेक्चुअलाइज द स्टेटमेंट कि भाई बेसिस क्या है विंसेंट स्मिथ के आर्ग्यूमेंट्स का. ही वाज टॉकिंग अबाउट द improvement in the sources to study history from the Mauryan period onwards and beginning of India's national life. Then मेन बॉडी में पार्ट 1 क्या करना चाहिए हमें? We need to substantiate Vincent Smith's point of view. भाई, when it comes to the sources, what was the scenario before the establishment of Mauryan rule? Pre-Mauryan period में क्या था? Do we find a lot of literature, diverse literature? नहीं मिलता है. Do we have access to a large number of inscriptions? नहीं मिलता है. Do we have, apart from the Harappan period, a lot of archaeological remains? नहीं मिलता है. So from the Mauryan period onwards, we start encountering a large amount of contemporary literature, not only religious, but also secular literature, not only Indian, but also foreign literature. Epigraphy makes its appearance for the first time from the Mauryan period onwards with the Ashokan edicts. Further, remains of Mauryan settlements such as palaces, ramparts, etc. They also abound, caves, etc. So, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वगैरह मिलने शुरू हो जाते हैं हमको इस पीरियड से. ठीक है. फर्दर, दूसरा क्लेम क्या किया था कि भाई इंडिया का नेशनल लाइफ शुरू हुआ. कैसे? For the first time, what we today recognize as being India or Indian was brought under the control of a single authority. So, political unity. For the first time, administrative centralization was used as a means to integrate what we today call India into a single geographic, political, and social whole. अच्छा. Further, with the Mauryans came a great deal of cultural creation at a national level under the influence of Buddhism. ठीक है. तो through Buddhism the state tried to create its distinct cultural identity. So new forms of art, music, literature, etc. that started to be produced. And यही जो political tradition of cultural creation है, that was inherited by the later dynasties. So they carried on with this tradition. लेकिन जो ये cultural identity की शुरुआत हुई है बनाने की, कहाँ से हुई है? मौर्यन पीरियड से ही हुई है.
Greater degree of cohesion in social matters also started with the Mauryans due to the Ashokan policy of Dhamma. ठीक है? Further, this tradition was carried on by subsequent rulers. Alright. If not in practice, at least एक ideal बन गया. ठीक है? The ideal of a Chakravartin Raja who was ruling over the entire Jambu Dweep and whose holy duty it was to uphold the dharma, right? तो वो idea आगे के rulers को भी motivate करता रहा. That contributed to the rising social cohesiveness within the subcontinent. People in different parts of the subcontinent started to recognize that they are part of the same great tradition. तो ये अवेयरनेस जनरेशन का काम इस पीरियड से शुरू होता है. इज दिस क्लियर? दिस इज द बेसिस ऑन विच विंसेंट स्मिथ हैज मेड दिस स्टेटमेंट. अब क्या करना है हमें? वी नीड टू क्वेश्चन इट. ठीक है? तो वी नीड टू प्रेजेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. बताइए. सबसे पहला आर्ग्यू क्या किया था हमने? वी हैड टॉक्ड अबाउट दी सोर्सेस, है ना? तो what can be the counter argument with regards to sources? दो चीजें होंगी इसमें कि इसके पहले वाले सोर्सेज ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. ठीक है? एट द टाइम व्हेन विंसेंट स्मिथ वाज राइटिंग इट मे हैव बीन ट्रू कि भाई कम सोर्सेज अवेलेबल थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद मोर डिस्कवरीज, मोर एक्सकवेशंस, मोर रिसर्च, a number of new sources have come to light. New methods, new research methodologies have been created in order to create a more comprehensive picture of pre-Mauryan India. ठीक है? Secondly, when it comes to periods of Indian history such as the Vedic age or the Harappan civilization, तो वहां पे there is abundant historical evidence, either literary or archaeological. ठीक है? So first of all, we need to question the dismissing that was done by Vincent Smith regarding the pre-Mauryan sources. So first of all, for understanding the pre-Mauryan period, sufficient evidence is present. And earlier historians did not have access to much of this evidence. विंसेंट स्मिथ का जो अप्रेजल है that is inaccurate. And secondly, मौर्यन पीरियड के जो सोर्सेज हैं, there are certain problems associated with them. For example, what is the problem associated with the Ashokan edicts? रॉयल इंस्क्रिप्शंस हैं, तो एक ही तरह का पिक्चर पेंट करते हैं. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल अफेयर्स और अशोका's वर्ल्ड व्यू, हिज फिलॉसफी ऑफ धम्मा, ग्लोरिफिकेशन ऑफ अशोका. तो दे डू नॉट कैप्चर द ट्रू रियलिटी. अर्थशास्त्र के साथ क्या प्रॉब्लम है? नॉर्मेटिव टेक्स्ट है, आइडियलाइज्ड वर्ल्ड को दिखाता है. इट मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू रियलिटी. मेगास्थनीज के इंडिका के साथ क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो ओरिजिनल वर्क एग्जिस्ट नहीं करता है. फर्दर जो फॉरेन सोर्सेज के साथ रेगुलर लिमिटेशंस होते हैं वो सारे एसोसिएटेड हैं इसके साथ. संगम सोर्सेज के साथ क्या, संगम बोल रहा हूँ, बुद्धिस्ट सोर्सेज के साथ प्रॉब्लम क्या है? भाई रिलीजियस वर्क्स हैं, हिस्टोरिकल अवेयरनेस, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग का मेन फोकस नहीं होता. रिलीजियस बायस भी वहां पे प्रेजेंट होता है.
ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है इसके साथ, ये भी हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। दूसरा, we also need to question that whether this was the period when national life of India began. To a certain extent, it is true. Okay? However, the concept of Jambu Dvipa, is it a distinctly Mauryan idea, an idea which emerged during the Mauryan period, या उसके पहले ही emerge हो चुका था? पहले ही emerge हो चुका था. The mention of an ambitious Chakravartin Raja who united the whole Jambudvipa under his control, that is also previous, तो उसके पहले emerge हो चुका है. This means that national consciousness predated or predates नहीं बोलना चाहिए, appeared much before the Mauryan age. When it came to the development of religion, culture, etc., सारे developments क्या Mauryan period में ही शुरू हुए? नहीं. तो development of Indian art, architecture, music, dance, etc., started much before the Mauryan age itself. Further, political formation, did it start during the Mauryan age या इससे पहले? तो once again it started much before the Mauryan age. महाजनपदा पीरियड से एटलीस्ट चल रहा था उस समय से. ठीक है. अच्छा, then the idea of nationalism, is it a modern idea or a pre-modern idea? तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ही एक्चुअली एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है. 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इंडिया में फैलना शुरू होता है. तो विंसेंट स्मिथ जब बोलते हैं कि इंडिया का नेशनल लाइफ मॉडर्न पीरियड से शुरू हुआ, he is actually engaging in some sort of you can say historical और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी. क्यों? क्योंकि ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट को एक प्री मॉडर्न पीरियड में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो इट इज अ modern concept that did not exist in the ancient world. And therefore, the line of inquiry started by Smith is itself invalid.
हाँ, यू कैन वेरी वेल डू दैट, लेकिन उसको करने का काम आपको करने का अपॉर्चुनिटी आपको कंक्लूजन में मिलेगा। ठीक है, दैट इज द नोट ऑन विच वी कैन कंक्लूड आवर आंसर। तो ये तो हो गया भाई उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन। कंक्लूजन, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने अभी मेंशन किया, इट कैन कंटेन अ क्रिटिसिज्म ऑफ द यूरोसेंट्रिक अप्रोच ऑफ colonial historians, जिसको हमने टेंजेंशियली इससे प्रीवियस वाले पॉइंट में भी टच अपॉन किया है। एंड साथ में और क्या बोलना चाहिए? कि भाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्क एज एंड गोल्डन एज, एज ऑफ लाइट, पीरियड ऑफ इल्यूमिनेशन, ये अब हिस्ट्री में अनफैशनेबल हो चुके हैं। देव गॉन आउट ऑफ फैशन। हिस्ट्री को देखने का नजरिया अब बदल चुका है। ठीक है, एंड देयरफॉर ये वाले नोशंस को भी अब चैलेंज करने की जरूरत है, एंड वेयर नीडेड इनको डिस्पेल करने की जरूरत है। Notions of darkness and illumination have gone out of fashion. Why? क्योंकि जो भी हिस्टोरियन किसी पीरियड को एज अ डार्क एज और गोल्डन एज अप्रेज करता है, इवेल्युएट करता है, इज एक्चुअली मिसिंग द पॉइंट। ही इज लुकिंग एट दैट पीरियड ओनली थ्रू अ सिंगल लेंस, होल पर्सपेक्टिव नहीं ले पा रहा है। इज नोटिसिंग ओनली द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और द नेगेटिव डेवलपमेंट्स दैट वर टेकिंग प्लेस। लेकिन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या फिर रियल लाइफ कभी भी ऐसा बाइनरी नहीं होता है। गुड विद बैड, डार्कनेस विद लाइट हमेशा जहां हमेशा रहता है। ठीक है, वी नीड टू टेक अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टुवर्ड्स हिस्ट्री। तो इस नोट पे हमें कंक्लूड कर देना चाहिए।